So, dear students, today we are going to discuss this experiment. It is experiment number 7. Now, the object of this experiment is assembly and making internal connection of a three-phase energy meter, main switch, MCB and switchboard. Okay, तो हमको इन सब के कनेक्शन देखने. Now you see this is the actual circuit, or you can say installation diagram. Here a three-phase energy meter where 3 current coil and 3 potential coils are connected, and the neutral wire is also running. Just after the three-phase energy meter, you can see this main switch. After the main switch, you can see this 3-pole MCB set, then double pole MCB, then a single pole. After that, it is distributed to several loads. Okay. Now, the actual setup is this one. It is installed on a wooden board. You can see here. You can see these are the 4 wires, which you may assume that they are coming from a three-phase energy meter. These are 3 wires, and it is the neutral. So these 4 wires are coming from energy meter. You can assume it as we have studied three-phase energy meter earlier, so we are not discussing the three-phase energy meter anymore. Then this is basically a main switch. You can see, so the 3-phase line passes through this main switch, and this main switch is used to isolate the entire circuitry from the service mains. And you can see that there are 3 fuse units are connected for 3-phase, and just under this conduit, the 3-phase wires along with the neutral wire is running. Then this is MCB unit. Through 4 wires are running through it, 3 phases and 1 neutral. And just after the this MCB unit, the entire 3-phase wires are distributed to several loads. This is double pole MCB, which may be utilized for several loads which needs 2 line voltages. And this is a single pole MCB, which may be used for a single phase load like fan or anything else. Now the main work for this practical is to install, to practice, and how do we connect circuit, different component in this circuit. What are the observation for this experiment? Simply we will check continuity, that whether there is a short circuit or whether there is an open circuit. So with the help of this Megger. So Megger is a kind of tester through which we can test short circuit and open circuit. With the help of Megger, we will test the continuity of the circuit. Okay. Now you see, we are going to test this circuit. ये पोजीशन एक लोड की है. यहाँ पर लोड हमने रिमूव कर रखा है. लोड रिमूव करने के बाद जो हम टेस्ट करते हैं वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं. विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मीटर वी विल टेस्ट शॉर्ट सर्किट. इसके जो 2 टर्मिनल हैं वो हमने सर्विस मेंस के उन वायर्स पे कनेक्ट कर दिए हैं, न्यूट्रल और फेस पर, जो बेसिकली इस लोड पर आ रहे हैं. राइट. तो लोड निकला हुआ है. अब हम इसको ऑपरेट करेंगे. जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो हम देखेंगे, प्लीज़, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ये बता रहा है. ओके. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बता रहा है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सर्किट ओपन है, लोड नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं है. अगर शॉर्ट सर्किट होता तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं बताता, ना ही अर्थ लीकेज है इसके ऊपर. अब हम लोड को कनेक्ट कर देंगे. लोड को कनेक्ट करने के बाद हम कौन सा टेस्ट करते हैं? हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, क्योंकि अब सर्किट कंप्लीट है. तो अब अगर मेगर इस वक्त 0 ओम बताता है, तो इसका 0 ओम या लोड का ओम बताता है, तो इसका मतलब सर्किट जो है वो ओके. यू सी दैट कि हमने लोड कनेक्ट किया तो ये 0 बता रहा है. ठीक है. सो दैट द सर्किट इज़ ओके, द वायरिंग इज़ ओके. तो इंस्टॉलेशन हमें ये सीखना है. मौका मिलेगा तो आप लोगों को सिखाया जाएगा.
इसकी रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।